Assalamualaikum viewers. Now we will discuss the topic of functional group. What is functional group? आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है functional group. First of all, we will discuss the definition of functional group. An atom or group of atoms or presence of double or triple bond which determines the characteristics properties of an organic compound is known as the functional group. कोई भी एटम या एटम्स का मजमुआ ग्रुप ऑफ एटम्स उनके दरमियान में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, कंपाउंड की करैक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ को बताने का नाम फंक्शनल ग्रुप है. अब हम मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे. मुख्तलिफ जो हमारे पास कंपाउंड्स में यूज़ होते हैं फंक्शनल ग्रुप, आज हम उनको डिस्कस करेंगे. टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स यूजेस इन मैनी कंपाउंड्स. फर्स्ट टाइप ऑफ functional group is alcoholic group. The functional group of alcohol is OH, means the functional group of alcohol is OH, and this line shows the bond with oxygen. The general formula is ROH. R means alkyl group. What are alkyl groups? Alkyl groups means methyl, ethyl, propyl, butyl. So many organic compound is attached with R. R means alkyl group. जो हमारा सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप की टाइप है वो है अल्कोहलिक ग्रुप. अल्कोहलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो बॉन्ड OH है, और जो इसका जनरल फार्मूला वो होता है ROH. R मीन्स है अल्काइल ग्रुप, जैसा कि हमने पीछे डिस्कस कर चुके हैं हाइड्रोकार्बन्स में. इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है मीथेन, इथेन हमने डिस्कस किया, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप इधर अटैच हो सकता है आर की जगह. ठीक है, आर मीन्स अल्काइल ग्रुप. एंड द एग्जांपल्स ऑफ अल्कोहलिक ग्रुप इज फर्स्ट methyl alcohol. CI through name is methyl and OH means the functional group of alcohol. That's why it is the name of methyl alcohol. And the same methyl, ethyl and propyl means 3 carbon attached. That's the name is propyl. And the OH group is the functional group of alcohol. That's why the name is N-propyl. N means normal propyl alcohol. Okay. And the second example or second type of functional group is ether linkage. The functional group of ether is COC, means C bond O and bond C. The general formula is ROR. R dash means R and R dash may be same or difference, means here R is methyl and other dash R may be difference, means ethyl group is attached with R dash. Now we will discuss the examples and you clear this topic. CI3O CI3, that are two methyl groups attached, means the same groups with R attached with oxygen, and its name is dimethyl ether. Di means two and methyl means CI3 group, and ether is the functional group, and its name is dimethyl ether. And we will discuss the example. Now it shows the first group is attached with methyl and the second group is ethyl, means two compounds are different on bonded with oxygen atoms, means R and R dash may be same or different. That's why the name is methyl, ethyl, methyl ether. Now the question is rise, can we write the first name is methyl and the second ethyl ether? No. Firstly we write the ethyl and second methyl ether. Why? Because E is the first abbreviation in language, in English language, and the M letter is means after in English language, means A, B, C, D and E. E first, then M. That's why ethyl is first and methyl is later. अच्छा, मैं अब आप एग्जांपल्स हम स्टडी कर रहे थे अल्कोहलिक ग्रुप की. सबसे पहले हमने इसकी मिथाइल अल्कोहल की एग्जांपल देखी है, देन हमने एन प्रोपाइल अल्कोहल की देखी है.
ईथर लिंकेज में मैं आपको ये डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ईथर लिंकेज में हम इनका जनरल फार्मूला डिस्कस करेंगे, फंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, एंड आर डैश का मीन्स है मे बी सेम और डिफरेंस। आर की जगह मिथाइल हो सकता है और इधर आर डैश की जगह इथाइल भी हो सकता है, और दोनों सेम भी हो सकते हैं। जैसे ये मिथाइल और मिथाइल, आर और आर की जगह मिथाइल और मिथाइल अटैच है तो ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने इधर एग्जांपल दी है। अब इधर मैंने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताना था कि इथाइल मिथाइल इथर लिखा मैंने, इथाइल पहले लिखा, मिथाइल बाद में, एंड लास्ट पे इथर लिखा। इथाइल मैंने पहले को लिखा, मिथाइल भी पहले लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एवरी आपके वर्ड है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, उसको हमने फॉलो करना होता है। ई इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट लेटर आता है एम की निस्बत, ई पहले आता है, इसी वजह से हम इथाइल पहले लिखेंगे, देन मिथाइल लिखेंगे, लास्ट में हमने क्या लिख दिया, फंक्शनल ग्रुप का जो नेम होता है वो लास्ट में लिख देते हैं ईथर। एंड द थर्ड टाइप इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। Aldehyde family consists of functional group C, double bond O and bond H, and the general formula is R, C, double bond O and bond H. Now we discuss the example of aldehyde. Methyl group is attached with the place of R, and the name is methyl aldehyde, and its common name is acetaldehyde. And the ethyl group is attached, replaced with R, and replace not means attached with C, and its name is ethyl aldehyde. And the last type of is functional group is ketonic group. The functional group of ketone is C double bond single bond C, double bond O and single bond, and their general formula is R, C, double bond O, bond R dash. Here same is the same phenomena like ether linkage. R and R dash may be same or different, and the two methyl groups are same, and its name is dimethyl ketone, and its R and R dash are different, and its name is ethyl methyl is ketone. Now we have finished this topic, and we discuss the functional group and its types, and also discuss with example of types. Inshallah we will meet in next lecture. Allah Hafiz.